أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So my name is Muhammad Faisal. Today is 11th of Jan, 2023, Wednesday. And the time is 12:13 p.m. Eastern time. So I'm in the Eastern time zone. This is a live talk. It will be recorded and dubbed into multiple languages later on. You will find this talk in Mandarin, in English, it's already in English, in Japanese, in Chinese, like in the Mandarin language, Russian, Malay, Indonesian, so on and so forth. So they're like pretty much like the dominant languages spoken by the French, the Spanish, the Portuguese, spoken by more than 5 billion people around the world. So it will be available and you can listen to that at that time. Today's session is going to be in English. I will be sitting here. The session is live. If any one of you have any questions, they can ask me those questions once the talk is done. The talk will be around 25 to 30 minutes. And the talk, today's topic is the role of DevOps, SysOps and cloud, and blockchain together. Like if anyone wants to go into the blockchain, this is one of the common questions I get. And I'm going to, the topic is based on that question. I want to go in blockchain. I want to go into AI. I want to go into, want to become a data scientist, so on and so forth, right? So we're going to cover all of those key areas. And I'm going to mention the part, what you have to do in order to secure those jobs. Whether those are remote jobs, live jobs, you want to work somewhere, have the global mobility, national mobility, whatever you want to do. Now, this is a live session. You can log on to our website, and if you can find the Zoom session, you can join the session. Any person in the world, you can join in, and you can just simply go here, and I'm going to show them one of the key things that we have, which is the stream portal. So we have this portal where anyone can join in. They can go to stream.anafe.com. This is the website name. They can go there, register themselves, browse to the room. When they're selecting, when they're registering, they can select the language they want to go in, right? So it supports pretty much all the key languages, as I said, French, Spanish, Portuguese, English, all those languages. And then you can unlock your global career potential, so on and so forth. So you can just go in there and just start. Is this the one? Are you sure this is started? Okay, let me see. Yeah, this is live. So you can ask your question here, whatever you want to say. You can just say that. Whatever language you write, it will pick it up and it will try to give us the language translation, so on and so forth, right? We will try to answer back as much as we can. If you have any other questions, you can always go back to our website, anafe.com. And there you will find the help in the form of WhatsApp. WhatsApp is there, so you can just click on it and it will take you to WhatsApp number, which is our Canadian number, and allow it. And then you can ask questions from there as well. The support team is sitting there. They will try to answer your question as best as they can. But if you have any technical questions, it is best to ask here. The sales and support job is to only assist you in terms of making a decision. But when it comes to technical questions, you have to ask us. I'm live sitting here. Feel free to join in and ask the questions. If I cannot communicate in your language, then you can write it down to me and I will try to use Google Translate to answer back. At Anafe, we use artificial intelligence to make education easier for everyone to understand. So again, if you're living in Japan, in Canada, in US, in UK, Scandinavian countries, European countries, South America, North America, Oceania, which is like, Singapore, Australia, New Zealand, all these island states, Malay, Indonesia, Malaysia, so on and so forth. Wherever you are, this is applicable to you. If you're in Middle East, this is applicable to you.
There is nothing in the world which is not being impacted by blockchain. So today's topic is going to be the role of DevOps and SysOps and cloud with the blockchain, right? So that why it is important. So we're going to talk about that. So let's view some reports by E&Y and some other industry verticals, and let's establish a few things. So this is a report by E&Y, Ernst & Young, and they are saying blockchain and DevOps, implementing transparent continuous delivery, right? As I said, technology is morphing very, very fast. There's waterfall model in development, there's blockchain, there is DevOps, which is completely agile business delivery, iterative implementation, small integrated DevOps, DevOps teams. Blockchain is basically, it's one of the cogs that by definition, anything in this world can be secured by blockchain. One of the key principles for any business is to provide a couple of key traits for the customers: confidentiality, integrity, availability, non-repudiation. Confidentiality means like the information is confidential to the person to whom it is intended for. Availability, that information is available to that person. For example, if it's a bank, no one should know what is in your bank account. It's confidential. Only you should know. Availability, the funds should be available to you. Integrity, if the account says you have $100,000 balance or 100,000 yuan or pesos or whatever, it cannot change. It has to be the same amount. It cannot be $96,000. It cannot be $110,000. I mean, no one would say no to more money, but depends. For us Muslims, it depends if it's halal or haram or not, right? If it's permissible for us or not. So these are the key things we really have to be concerned about. We as Muslims, we have to understand what is the source of the income, how are we earning it, and how are we spending it, right? Because we are accountable for that. So that is confidential. Non-repudiation, no one can deny. I mean, the receiver cannot deny that the information is incorrect or whatever the case is, right? It has a lot of definitions. So these are some of the key traits. Any business in the world requires blockchain. Any business. When I say blockchain, it's not Bitcoin or cryptocurrencies, no. That's one of the industries which is using blockchain, for offering these currencies, right? All other industries in the world, they are being impacted and they are heavily becoming reliant on blockchain. And that is the core topic that we're going to discuss today. Because Islamically, blockchain, cryptocurrencies are haram. Haram means, in their present form right now. And I'm very careful in their present form, because there's a lot of speculation. There's a lot of gharar, doubt, in Arabic as we call it. There's other things as well. A person doesn't need to be a very big scholar to understand what is haram, what is halal, what is haram, when you can, use your simple common sense, if you have it, to derive the ahkam. Because most of the ahkams are very straightforward in Islam. Accelerating software delivery and IT support processes. So DevOps, why is it important, DevOps? So this is a very good study to review. My suggestion to you would be, once you are done with this talk, go in and review the study. Just type in blockchain and DevOps, E&Y, and you will be able to see the study, right? That's one study. Auditable biomodel DevOps delivery. That is the most important thing. In blockchain, everything is auditable. Every action is auditable because it is maintaining a ledger. That is the key aspect. So it talks about secure, it is scalable, it is collaborative, it is auditable, it is programmable. These are some of the key traits. And, decentralized, synchronized, traceable, immutable, right? All of these factors are very, very important for any business globally in the world. Whatever industry you are in, and if they're using any kind of information systems,
they are already using blockchain or they will be using blockchain already. Like it's already on the horizon. So there are unpermissioned blockchains. There are permission blockchains. Again, there are two kinds of systems nowadays, public and private. It's becoming pretty big. There are different kind of delivery models. I'm not going to go into that. This is not a software development class, though we do take it. We do go through all of those things. And then enterprise DevOps blockchain, biomodal DevOps implementation using blockchain. This is the next generation stuff that you are seeing right now, right? So this is a good report. You should read it, understand it, to understand and get a sense of why it is required, right? Now, today's topic is going to be around, why, if you want to become a blockchain engineer, you need to understand DevOps. Because if you don't know DevOps, you cannot become a good blockchain engineer. Because wherever you go, you have to deploy that application on the cloud. The code needs to be deployed on the cloud. The code needs to be maintained on the cloud. The code will be basically needs to be secured on the cloud. All of these things are in the cloud. So you need to understand and learn DevOps and SysOps. DevOps is for understanding how to manage that application, the software, the code. And SysOps is basically how to manage the infrastructure on which the code resides. So the code sits somewhere and it sits on top of the infrastructure. You don't need to go through DevOps certifications. There are no DevOps certifications. You don't need to go through, other organizations are creating these ones, but you don't need them, except few like Kubernetes and whatnot. But apart from that, you don't need any of those things. What you need is the work. You need to understand the work. You need to get the hands-on, and that's what we are going to cover today. The other thing, which is the cloud. Why do you need to know the cloud? Because the infrastructure, all of these things, they reside basically on the cloud. There are no data centers per se. Even the data centers are being virtualized. So you need to understand the key methodology, the key mechanics. And if you don't have that, you can't do anything. You cannot do anything. So that is the key aspect that we're going to cover today, right? Blockchain is already improving DevOps practices, in Web 3.0 significantly. This is a very good article, came in August 17, 2022. And it talks about, how organizations have already started integrating blockchain into their practices for developers, right? Again, you can go through this one by one, understand, all of these things. And this is becoming like the bread and butter for all the developers. No matter what happens, there are two professions that will always be in demand. One is basically the developers, but not the developers that the universities are creating. No. The universities are only teaching developers the basic principles. But when it comes to how and what to do into the industry, this is not something that they teach. And that is where Anafe comes in. We come in, and this is what we do. So what we are teaching presently is the key aspects of DevOps. We have this whole DevOps, SysOps, and blockchain advancement track. We offer that. It's a combined track which covers everything, right? Which covers a lot of things. So if I have to break it down, so there is DevOps with CAT. Career advancement track is, which is now known as the cloud cybersecurity diploma, right? It's a diploma which covers cybersecurity, offensive security, digital forensics, SCADA, all the key industries, SysOps, which is the Red Hat part, all the open source technologies, data science in Python, so that you can understand and learn all the labs. eMath it has been basically, we have deleted this thing now. There's no eMath anymore because we have moved that into our AI tracks. And then we have, some other things, like, for example, there is LinkedIn course, which teaches you how to use LinkedIn to secure the jobs of the future. And for that, we will be having a big event coming in. If I have to show you the LinkedIn event,
That's one of the events which is coming up. My suggestion to you would be, go online and follow us on LinkedIn, YouTube, Twitter, so that you can understand. If you go to our website, you'll be able to see, all the links that you have to follow. So I'm going to just show you that quickly so that you can follow those things. So go here on the website, go at the bottom. You will see Facebook, Twitter, LinkedIn, all these key tools that you have to learn. So if you go to YouTube, follow that page, because you'll be finding most of the information over here in the types, in the form of live talks, because we are mostly live, and that's where we talk about all the key aspects, right? So you can ask questions here as well. We will try to answer as much as we can. I'm going to, understand what your questions are, and I'm going to answer them from here. Facebook is here. You can click on Facebook and you can follow us on Facebook, and make sure that you follow the page properly. And the same goes to Nafe LinkedIn page as well. Now there is a masterclass coming up. This is a global masterclass on 15th of January, right? And this is going to be at around 10 a.m. Eastern Standard Time. So select the time that works for you best, and then go and join the class from there. So one of the things that you have to understand is that before you study anything, you have to understand the job market. So let's go back and look at some of the jobs that they're asking for. So I opened the LinkedIn page. It's one of the portals, and I typed in blockchain and Japan. So in Japan, there are 569 jobs. If I type in USA, United States of America, then it will show me all the jobs in the United States of America, right? If I type in basically worldwide, Canada, right? It will show me all the jobs in Canada, right? It's a good portal to look around, and you will see InfoSec specialist, lead application security, like everything is connected. Manager, senior manager, blockchain and crypto assets, right? Startup founder, blockchain, AI, ML expert. I mean, they're asking for blockchain, AI, ML expert. See, there are 5 things I always tell everyone to follow. The first thing is DevOps. In the middle, there is, the cyber part, the CAT, the career advancement track, or now the new name is cloud cyber security diploma, right? This is where we cover all the key industries. So DevOps advancement track, if you have that, you can follow SysOps and cloud add-on track. Then you can follow blockchain advancement track, the add-on. Then you can follow AI advancement track, and then you can follow the big data. I mean, one of the person asked me, doesn't that make me a jack of all? No, you're not jack of all. Unfortunately, all the tools there reside in the cloud. If you don't know how to use the cloud properly, how to secure the application, what are the business use cases, then you are nothing. You're no jack. You're just a John Doe, right? That's another big problem. Being jack comes with some benefits. Being a John Doe, you're a dead man, right? Any dead body, if they don't have a tag name, in US, in the West, they recognize that as a John Doe, right? Unfortunately. So you can see, and most of them are remote, like remote Canada, whatever the case is, right? So if I search here, and whenever you want to study something, always try to look into the job portals, and what do you see? So I'm going to open some of the countries, Australia, some of these countries, India, Indonesia, right? Let's type in Malaysia, the G20 countries, right? China is a big country, and they have many things going on. But the problem is, like, their job portals are very different. We have to, type in China top job portal, right? So we need to find what are the top job portals in China, where like you can find something better than LinkedIn or whatever, right? Because they have a separate economy where they basically insulate themselves from the outside world in many ways. It has pros and cons, but that's how things are.
So I'm going to type in, and I'm going to type in, cloud. I will check it on later on. So this is available, best job portals. There are many job ones, entry to middle, etc., etc. Now, we were here, Sweden, all of these countries. Nigeria is another country. And Nigerians are very hardworking people. United Arab Emirates, UK, USA already, checking it out. Germany is another country. Finland. So, you can check all of these countries. These are global countries where you'll be able to find a job, right? So just type in cloud. How many jobs are there in the cloud? This is Nigeria. I would type in blockchain, right? So even in Nigeria, you will find jobs, right? Web developer, 3.0, game planner, all of these countries, right? This is, again, another place. So we type in cloud. This is UAE, 1,000 jobs. Emirates is hiring, right? Then we type in blockchain because most of the black money comes into UAE, unfortunately, right? It's a country which is built upon the foundations of black money around the world, right? Blockchain smart contracts. If any UAE resident has an issue with it, you should talk to me. Then we can talk about all of these things. So we type in blockchain, right? This is UK. You will find jobs here as well. We type in cloud, you'll find jobs here, right? So you will see if I type in blockchain, they're asking for people. The salaries are very nice. Salaries, like, they starts from 40,000, whatever. Junior trader, crypto and blockchain. This is a trader job. Operation officer, crypto and blockchain. Business development, product owner, blockchain, the workshop, right? So this is part of the team. And they have all these information about what do you have to do, right? Work with the managers, et cetera, SDLC, all of these things. And you can see they're all working in the cloud technologies, right? Junior technical support engineer, coin firm, cryptocurrencies, again, help desk, Zendesk, stuff like that, MySQL skill, basic skills. Blockchain engineer, 110,000 to 120,000. They cover all the key aspects. And they haven't mentioned a lot, but they're saying Python, Solidity, and TypeScript. This is the new startup. So startups, like when you work in a startup, you have to work on everything, right? So you can see, so there are tons of jobs available. This is one of the other countries, Germany, right? You can see, again, some very good high-paying jobs. Let's change the name. Because before you study anything, just go in and see what does the job market tells you. Where do you see the jobs? That is the first question you should ask, right? There's a very famous hadith saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him. What were the first revelations of Quran that came down? They were not about don't steal. Our mothers of the believer, Amma Aisha radiallahu anhu, may Allah be pleased with her, she said, the first revelations of the Quran that came down on Prophet Muhammad, peace be upon him, were regarding what? They were not regarding stealing. If it said don't steal, everyone would say, I'm going to steal. If it would said don't commit fornication, everyone would be committing zina, fornication. If those would have been said about, like, don't lie or don't drink, they would have done all of those things. The first revelations that came down were regarding paradise and hellfire. What is paradise? If you do good deeds, you get paradise. If you do bad deeds, you get hellfire. Because you have to mold the hearts first. So molding the heart is very important. So you need to understand exactly where are the jobs. What are the benefits? Why am I investing my time? That is the number one question you have to ask. Why am I studying? Why should I study this thing? That's the number one question that the universities should ask themselves. What are they teaching to the students? Is it going to benefit them or not? What are the benefits? If the students doesn't know the benefits, and the university, should ask, like, the university doesn't know the benefits, what would the students know? They don't know anything. And the problem is that
they are coming from a system where the job market is here and they are left over here. So it takes them, at least 2-3 years to crawl to the job sector. So one of the key things you need to understand is, in order to go into the job, you have to learn the job description from day one. Like in the olden days, when anyone wants to become a knight, they would put their sons with the knights. And there's a specific word in English, I can't remember, like you have to become that person first, where you carry the stuff of the knight, and then slowly and gradually you are knighted, right? As you go up, right? Similarly, if someone wants their son to become a blacksmith, they will integrate that person with the blacksmith. If someone wants to become a doctor, they will integrate that person with the doctor, right? Their kids to the doctor. It was on the job training from day one. And that's why people were very good at it. The problem the universities and the colleges did was they created the system where the academic knowledge is instilled into the person, but there is no skills. There are no skills. Because when you go into the industry, yes, you need the academic knowledge, but it's here. But you need the industrial skills in order to work. And that is the problem. So that's why when you go in here, they're not saying you need to have a degree. They're not saying that. They're saying, what do you know? What can you do? See? So this is Argentina blockchain, 159 jobs, right? If I type in cloud, 1739. Argentina is a big economy. It's huge. You can even study. Many of our students are, by the way, are working in, as we call it, FANG, like Facebook, Microsoft, Google, Twitter, all these companies, right? Tesla, et cetera, et cetera. So type in, in Australia, cloud, you will see companies, project research, junior blockchain developer, junior. This is a junior guy. This is a junior guy. Bitbucket, GitHub, experience in using source code management tools, understanding of this and this, 75,000 plus super. I don't know what super means, right? Super benefits, I don't know. Superman shorts, I don't know. I have no idea. Anyway, so we go forward, and this is India. India and blockchain, 4,794 jobs. Internship, Ahmedabad, Gujarat, Tech Mitra, right? You can find these jobs here. And in these jobs, if you have the automation skills, if you have all of those skills, it can take you a long way, very fast, very, very fast. Type in cloud here, everything is connected. Everything is connected to the cloud and DevOps, right? And you will find the jobs. But here's the thing. See, this is a very classic example. You will see all of these jobs connected with each other. This is Jakarta, Malaysia, right? Indonesia, all of these island nations. They have a lot of jobs. This is just one of the job portal, by the way, right? And most of these jobs, they come job type, whatever the case is. Mostly nowadays, the emphasis is a lot on remote jobs and whatnot, right? So again, this is Malaysia, right? You can see this is again in China. Type in, and we see 446. But again, Chinese market is very different. Chinese market is very different because in China, you need to understand, it's a country which insulates itself for many reasons, right? From the outside. So the first thing you need to understand is you need to understand what you need to study and how you need to study, right? That's the first thing you need to understand. And if you know that, then you can go in. Now, this is one of the job portals of China. As I was looking into it, zhaopin.com, you can see cloud, and you can see these jobs, 4,000 to 8,000 to 13,000 salary, cloud native product developer, negotiable, full stack developer, all of these things, right? They're all going to the cloud. Now we type in blockchain again. It's a big thing in China as well. And you will find, again, many jobs over there as well, right? And senior software engineer, they're asking for that. They're asking for, Java, JavaScript, MySQL, Oracle SQL, wholly owned, foreign owned, Asia Pay, all of these things. Now let's look into the industries where, blockchain is penetrating.
There's a very good article about blockchain. And this is regarding, what's the name of the company? PR Newswire. It's one of the very reputable firms in terms of doing research. And this is from Bloomberg, one of the most prestigious newspaper when it comes to business news, right? Technology market size likely to grow at 44.5% cumulative annual growth rate, CAGR. Look at the 45%. Now, this technology is not about crypto industry. No, this is about organizations implementing blockchain. Any industry on the face of the planet, financial services, travel mobility, infrastructure and energy, healthcare, government, retail and CPG, consumer packaged goods, as they call it, agricultural and natural resources, information and communication, entertainment, enterprise technology. Is anything left out of this space? No. These are the world industries. There can be sub-industries in there, but these are the world industries. So you can see the world is adopting blockchain for greater transparency. One of the key elements, if you're running any business, is transparency, how transparent you really are across all digital information ecosystem. That is the most important aspect. Government organizations, the government organizations in the Asian countries and all those countries where there's a lot of corruption, if they start implementing these things, people will know what is happening. People will know, how much money is being stolen, has been stolen from the people, so on and so forth. So you can see banking, you can see stocks and trading and hedge funds. I mean, they are implementing it, crowdfunding, and you can go into crypto exchanges are there, will and inheritances are there so that no one can, in Asian countries, there's a very common problem. What they do is they forge your property papers, and one person property is being sold to almost 10 people. And now the 10 people are fighting in the court because there is no authenticated record that, that cannot be fudged or cannot be compromised. So if you create and bring in the blockchain system, there's no corruption. And that's one of the reasons that organizations and governments around the world are implementing this thing. So cryptocurrency is a downward spiral. The FTX exchange that happened this time, in 2022, the biggest highlight was for FTX exchange. All these cryptocurrencies, they are just Ponzi schemes right now. Ponzi. The reason is, they rely on speculation. They rely on get-rich-quick schemes, which are all basically, worth nothing. You can throw in your money, but you won't earn anything. You won't learn anything. So how do you learn these things? This is what we're teaching. When you start the DevOps, you learn all these key things. And then you go through the labs, along with the career advancement track, where you spend 1 hour every day studying this, 1 hour every day studying this until you complete this, and then you go back to the labs. SysOps, this is a completely different thing. It makes you an expert in the cloud domain. So you know not only how to develop the application, how to maintain the application, but then you also know how to, run the application on the infrastructure. So there are three things. We haven't covered the developing the application. We have covered DevOps covers maintenance of the application. And SysOps covers how to run the application on the infrastructure, right? That's the car. The passenger is basically the application itself, how to maintain it. And then the application part comes here in the blockchain, where we are teaching you all the key things. And this is all changed up now. There's a new curriculum coming up, right? So we are covering all the key things. I mean, this is all here. Blockchain, Ethereum architecture, Solidity, all of these things. But then there's a new, thing. And I'm going to show you something that, we do teach, and we are covering all of these aspects. And which is very interesting, is that the new courses that we are creating now, which are going through the accreditation process, and ANAFE is now getting accredited right now as we speak. We're going through the accreditation process.
So we are covering, like qualification, right? This opens doors for you to apply to any, any British university outside of your country or any other university outside of your country. If you want to go somewhere, you can learn this and move forward, right? So if you come here and you see this is what you have, right? And you open these things for you so that you can see. You can see blockchain advancement track. You can see big data. And if you do blockchain and DevOps and together, that covers all the key aspects that you need to have in order to get admission in UK, right? It covers everything. It covers everything that you need to understand and that you need to know. So that opened doors for you in terms of going to British universities, in terms of learning and expanding your stuff, so on and so forth. One of the key things we have done recently is that we have started mapping the job descriptions to our hands-on tracks. And what we're doing now is, for example, blockchain. In the new course, you will learn what does a blockchain developer does. What does the solution architect does? That's the DevOps and SysOps guy. What does the project manager does? What does the UX designer does? The quality engineer, the legal consultant, the web designer, the architect. So we're teaching you all of these job descriptions instilled within basically the course. So that is the value that you're getting in terms of understanding. So we're not only teaching you this, but we're also teaching you each and every industry vertical that you can think of, that you can understand. Like, for example, we are covering all the key aspects. Like, for example, if I have to show the screen to you, and this is the final part, and then I will take a break, and then I will open the floor for Q&A, is that these are the labs that we have right now. There are more than 2,000 labs, right? So in the blockchain labs, you will see that we are covering all the key aspects, which you need to learn and expand your horizon. Like if I open this, you see, we are teaching you blockchain use case, developing an application in finance industry and supply chain, automotive, mobility, vaccination dose, digital health pass, voting app, food and safety, supply chain and aerospace. Industry-wise, we have covered all the key verticals and we've created these applications and I've given it to you. So the biggest benefit that you get by studying the advancement track is to ensure that you not only learn this, but you get the hands-on experience because you can apply for the jobs, trainee from day one if you're an annual member. If you're not, then you can apply for that. And we will start doing that on 30th of January per se. But if you're the monthly or quarterly member, then you can do so on the fourth month. So this will equip you with the skills, the knowledge, and accredited qualification that open doors for you for the remote jobs and for the jobs of the future as well. So I'm going to take a break here now, and then I'm going to open the floor for some Q&A. I will be sitting here for the next 30 minutes, inshallah. If anyone has any questions, they can raise their hands, or they can also go to the stream. I will take some questions from the stream. They can ask there, and I will try my level best to answer those questions. This session will be recorded into multiple languages and will be presented. If you have any questions whatsoever, you can always go back on our website, open the WhatsApp button, click on it and ask questions. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, Yusuf, you can take a pause. Give me 2 minutes to get some water. मैं पानी ले आऊं, पानी पी लूं थोड़ा सा, and then I will take some questions. ठीक है? So Yusuf, जब तक तुम्हें सवालात लेने तुम ले लो. Bismillah. I'm coming back.
Okay, Yusuf, Bismillah. Who has the first question? मैं Yusuf, I can't see you. तुम पता नहीं कहाँ पर हो. I'm not even sure where you are. Okay, whoever has a question, please raise your hands. I'm going to open the floor for some. If anyone has any questions they want to ask, they can do so basically by typing it in the Zoom meeting as well. Okay. All right. So I'm going to open that. Bismillah. Yes. So the first question is from Muhammad Afzal. Yes, go ahead. Muhammad Afzal Saab, boliye. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। फैसल भाई, मैं अफसल बोल रहा हूँ यूएई से। पहले भी एक दो दफ़ा बात हुई। फैसल भाई, वेरी क्विकली, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। मैंने कैट का स्टूडेंट था, डेवऑप्स एडवांसमेंट ले लिया। काइंडली नए एलएमएस पे मेरी लैब्स नहीं चल रही। What do you mean by labs? शायद जी, नए, शायद आपके नॉलेज में हो, नए एलएमएस पे मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है सेकंड और 3 दिसंबर को। तो खैर बाकी इश्यूज शायद आपके नॉलेज में हुई, उसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं या जो हमारी अपडेट्स हैं वो नहीं है उस तरीके से हो रही जैसे पुराने पे चल रही थी। देखिए तो सुनिए, उस पे लिखा, लेकिन जब आप लॉग इन करते हैं उस पे लिखा हुआ है कमिंग सून। मैं उसको हटा जी रहा जी, हूँ। यू विल बी गोइंग बैक टू अच्छा द ओल्ड पोर्टल। ओल्ड पोर्टल में अब अच्छा आप 2 काम करेंगे। उसमें मुझे जी, थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज एजुकॉल ने एक लंबी लिस्ट दी है हमें चीजें करने की। एजुकॉल ने पुराने पोर्टल को कहा कि ये सही है, बिल्कुल इसमें सब ठीक है, चीजें आ रही, सब चीजें सब ठीक है। इसमें तुम्हें दिखाने के लिए तुम जो है ना अभी इसको फिर इनको नहीं दे सकते। तुम यहाँ लैब्स करवा लो इनसे, ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ से हटाकर वहां डालनी पड़ेंगी। तो हमें फ्राइडे को जो है ना आप सब लोगों को वहां से डालना शुरू करना पड़ेगा। आपको वहां लेके जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ आप ओके गुड, पोर्टल में जाके अपनी वीडियोस देखेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, क्विजेस करेंगे, डिस्कशंस में बैठेंगे, रिव्यूज करेंगे, सब आप वहां पर करेंगे। एग्जाम भी आपका पुराने पोर्टल में ही होगा। जब आप सारे कोर्सेज खत्म कर लेंगे, एग्जाम की फीस पे करेंगे, आप एग्जाम भी दे सकेंगे, ठीक है ना। लैब्स के लिए ठीक आपको पोर्टल में आना पड़ेगा, वहां कंटेनर पे क्लिक करेंगे, कंटेनर खुल जाएगा आपका, फिर आप लैब कीजिए, वीडियो वहां देखें, लैब यहाँ पर करें, ये चीज होगी। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक हो गया। फ्राइडे को आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। जब तक वो एजुकॉल जो है ना हमें, क्योंकि अब हम रेगुलेटेड हो गए ना, हम क्या करें। जी सो जी, वो सुनी थी मैंने कल। वी हैव टू बड़ी फॉलो द रेगुलेशन and we have to make sure that we comply with those things, and if they say something then we have to follow it. चलें, ठीक हो गया। अब नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ी अपडेट दी थी, क्योंकि पिछले ज़ाहिर एक महीना हो गया, 27 दिसंबर को, नवंबर को बंद हुई थी लैब्स वगैरह। तो ज़ाहिर है अब देख, आज जनवरी की है। 8 दिसंबर को हमने ओपन वीपीएन बंद किया था, नवंबर में नहीं, 8 दिसंबर को बंद किया। जो ईमेल मिली थी वो 27 की थी। है, चले ठीक है, वो पता हो है 8 सकता है मैं दिसंबर डेट्स, हाँ तो ठीक हो गया। चले, तो इट्स मीन के हम अगले 2-3 दिन इसका मतलब है वेट कर लेते हैं। क्लियर, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच सर, मिल इनफ। जाएगी। चल, थैंक यू। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़े सवालात पढ़ लेता हूँ दूसरी जगह से जो लिखे हुए हैं। जुनैद इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि भाई few weeks before CAD expiry access labs was unavailable, support team said they will compensate my labs on new portal. आपको मिल जाएंगी लैब्स। मैं इसके लिए जो है ना पूरा वो खोल रहा हूँ, एक अलग से प्रोसेस बना रहा हूँ। जिनको मुश्किल हमसे हुई है, जुनैद इफ्तिखार साहब, उनको लैब्स मिल जाएंगी। दे विल गेट द लैब्स, ठीक है, दे विल गेट ऑल दोज थिंग्स एंड दे विल गेट एक्सेस टू द कोर्सेज एज वेल, कि जिसमें उनको मसला हो रहा है। So we will compensate 1 to 2 weeks for you. So don't worry. That is coming. ठीक है ना। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि my father is going to arrange my initial cost with bank statement to move to Al Nafi Industry in UK. Is this 100% confirmed that you will be able to start my session, or is there any chance of postpone of September? He has to arrange money. देखो यार अब्दुल्ला खान, मैं तो फरवरी में फर्स्ट सेशन स्टार्ट करना चाह रहा था, क्योंकि फरवरी, मई और सितंबर 3 सेशंस होते हैं। लेकिन जब इंसान काम करने जाता है ना तो उसको पता चलता है। उमर बिन खत्ताब ने अबू उबैदा अस्सक़फ़ी को जो है ना, जिसे कहते हैं ग़ज़वत अल-जिस्र, जिसे द बैटल ऑफ द ब्रिज, ठीक है ना, मारक़त अल-जिस्र, उसमें उनको उन्होंने बना के भेजा। और वो उनके साथ था कि भाई वो पर्शियंस के साथ उनकी लड़ाई थी। वो गए और वहां पर 4000 सहाबी शहीद हो गए, ठीक है ना।
अबू उबैदा सकफी जो है ना, वो और उनके साथ उनका बेटा, उनका भाई, उनका दूसरा भाई, उनका दूसरा बेटा, सब एक एक करके वालिद सब गिरते चले गए। इसके अलावा वो ताबी थे एंड दी अदर जो साहबी थे वो भी सब गए, और बड़ा मुश्किल वो था। तो इंसान बहुत सारी प्लानिंग करता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब को बड़ी कामयाबी दी, और यही सारे जो है ना आपस में लड़कर, जब ये पर्शियंस आपस में लड़ना शुरू हो गए, फिरोज और जो उसके साथ कमांडर था, तो उसी के अंदर मुसलमानों ने उनको बराबर कर दिया। तो बहुत सारी चीजें इंसान प्लान करता है लेकिन उसको नहीं होता, तो क्या करें। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, राइट। सो मैं तुमसे कहूँ कि यार कर लो, बैंक स्टेटमेंट के वो कंफर्मेशन के वो पैसे जमा कर रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये मेरा अभी होता है एजू कॉल, और वो फरवरी में उसकी मैं ओएफएस की जमा कराता हूँ सब मार्च में, तो 4 हफ्ते इसको लगते हैं, 4 से 5 हफ्ते लगते हैं, 6 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं। बीच में कोई ऐसी चीज आ गई, कोई कोरोना वापस आ गया, कोरोना वापस आएगा वैसे भी, लेकिन अब बैठ गया, ठीक है। कोई दूसरी चीज हो जाती है, फिर मैं क्या करूँ। सो मैं कोशिश कर सकता हूँ भाई, और तुम्हें ऑनेस्टी के साथ बता सकता हूँ, वो सारी मीटिंग रिकॉर्डेड हैं। मैंने गोरे को बोला तुम्हारी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तुमको मसला है? इसने कहा नहीं है मसला, ठीक है। मैंने कहा जो तुमसे सवाल करूंगा ना वो रिकॉर्डेड है, ताकि किसी को कोई पूछे तो मैं ले लूँ, जाओ ये ले लो, ठीक है। तो मेरी जितनी मीटिंग रिकॉर्डिंग है ना सारी, जिस तरह मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, उस तरह मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उस तरह मैं घर में बात करता हूँ। कोई मेरे घर में वीडियो बना के डाल दे इंटरनेट पे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वही चेहरा नजर आएगा जो एक चेहरा है, मल्टीपल चेहरे नहीं है भाई, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो आई कैन नॉट से आई एम वर्किंग हार्ड अब्दुल्ला, ठीक है, एंड आई विल सी इंशाल्लाह व्हाट अल्लाह हैज इन इट फॉर मी। जी नेक्स्ट बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मेरे सर एक दो दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है सर कि मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह फरवरी में नेक्स्ट ईयर आपके पास यूके की यूनिवर्सिटी में आने के लिए। एंड फॉर दैट अभी मैं इंशाल्लाह कुछ ही दिन में डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक भी ले लूँगा और इससे 1 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश करूँगा। दिन में सर मेरे पास 5 घंटे हैं, बिकॉज जॉब भी है मेरे साथ चल रही है, तो उसमें सर थोड़ी मुझे आप गाइडेंस। प्लीज अपनी आवाज ठीक करो, बहुत खराब शर आवाज हो रही है। मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा, अपने माइक वगैरह सब ठीक करके आओ। जी शिराज साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी सर वो बस आपसे मैंने आपको ईमेल भेजी थी मल्टीपल। मेरी जो आपसे लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपने कहा था कि मैं अपना बेल का जो है जो जी करवा रहे हैं। शिराज दिल वाले ना, जी जी मैंने आपकी चीज बना ली, माफ कीजिएगा, मैंने आपका मैसेज देख लिया था, मैंने आपकी चीज बना दी है। मैं जी आपको जी दिखा देता हूँ कि क्या है उसमें। आपने जो ईमेल मुझे लिखी थी ना, उसमें जी कुछ जी चीज, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको जो बेल में उन्होंने जो मांगा है आपसे, मैं उसको खोल रहा हूँ, मैं किसी को जी दिखाने, ईमेल आपको तो नहीं करूँ, ठीक है। ठीक है। मुझे mohammed@nafi.org पे भेजा था ना। आपको मैंने जीमेल का जो अकाउंट है उस पर भेजा था। ईमेल वाले पे भेजा था, अच्छा जी ठीक है। जीमेल पे। आपका SHERAZ जी शिराज, जी शिराज हाशमी। मैं कहते हैं तो फिर से फॉरवर्ड कर दूं? ठीक है, मसला नहीं। शिराज हाशमी जी जी आगे मेरे पास खोल रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके साथ एक मसला है, मैंने आपको कहा ना, जी जी आपके उन्होंने कहा है कि AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर का कोर्स करना है, एग्जाम इज ऑप्शनल ऑन दिस, जी ओके, ठीक है। एक उन्होंने ये बोला आपको, फिर उसने कहा है आपसे कि यार तुम्हें जो है ना वो भी करना है, CCSA का एग्जाम पास करना, राइट, जी जी ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये आपको अब खुद देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसी चीज में फंस गए हैं कि उसका कुछ हो नहीं सकता। तरीकेकार है निकलने का। मल्टीपल जगह हाथ डाल दिए। यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, आपको जॉब से निकाल देंगे। नहीं नहीं वो मेरी एग्जिस्टिंग जॉब चलती रहेगी, लेकिन मतलब मेरा प्लान तो ये है कि मैंने मूव होना है, यहाँ जो मेरा एग्जिस्टिंग रोल है उससे निकलना है और क्लाउड में ही जाना है। अगर आपको क्लाउड में जाना है ना, आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी सब कुछ है। अब आपसे इन्होंने मांगा है AWS के ऑपरेशंस। AWS ऑपरेशंस क्या है पता है आपको? जी सर अभी पढ़ रहा हूँ। अगर आप जाके पढ़ेंगे ना AWS के ऑप्स क्या है, मैं आपको AWS के ऑप्स दिखाता हूँ क्या चीज। AWS के ऑप्स ये चीज, ये जो लैब्स है ना डेवऑप्स के अंदर, जी ये जी कॉन्फ़िग, सिस्टम मैनेजर, क्लाउड फॉर्मेशन, ऑप्स वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ये सब चीजें, ठीक है। ठीक है ना।
ये सब चीजें हैं। और फिर ऑप्स के अंदर कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ये सब चीजें भी आ जाती है। फिर ये भी आता है क्लाउड वॉच, एक्सरे, क्लाउड ट्रेल। आप अभी टीम के साथ बैठ जाएं, मैं आपको बोल देता हूँ, जहाँ टीम के साथ बैठ जाएं आपको ये सब चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक ठीक है। है ना। अच्छा, दूसरा आपका उन्होंने कहा है ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन ये रहा, ये आप एक लैब पढ़ेंगे खाली, ये 15-20 मिनट की लैब है। उसको लैब को पढ़ने से पहले आपको ये काम पाइथन का जो है ना कोर्स है ना, ऑटोमेशन, और ये आपको ठीक है। खत्म, सारी ऑटोमेशन पाइथन में। अच्छा, ये ठीक है? खत्म करना जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये आपके लिए अगर मैं कहूँ कि आपको कौन से कोर्सेज खत्म करने हैं उसके लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यानी कि सारे एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। आप एग्जाम ये सारे कोर्सेज खत्म कर, ये 160 में से 169 में से आप छोड़ दें, यानी कि ये 12 घंटे निकाल लें, 157 आवर्स ये बनते हैं। ठीक है। और जो उसका जो काजिम का जो कोर्स है उसके 70 घंटे में, यानी कि ये जो कोर्स है ना, ये आपको पूरा क्लाउड का जो उसका जो एग्जाम है ना, जो वो कह रहे हैं कि भाई आपको एग्जाम भी निकालना है ये वाला ना, यानी कि वो सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। यानी कि इसके अंदर वो सारी चीजें देखें, अगर मैं आपकी ईमेल यहाँ पर दिखाऊं, जी, इसमें है ना, आप ये करना है, ये करना है, ये सारा उसका है। एग्जाम इज मैंडेटरी, ये कह रहा है भाई एग्जाम मैंडेटरी, ये पता क्या है, क्लाउड सर्टिफाइड क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये चीज है। अच्छा, CSA, ठीक है। ये ना, ये पूरी चीज है इसके अंदर, तो वो बहुत आगे तक चला गया है, तो आपके लिए तो कुछ करना आसान हो जाएगा ना उसमें। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपका जो ये लिखा हुआ है क्लाउड ऑटोमेशन का जो फॉर्मेशन है, मैंने कहा ना ये 1.5 घंटे में बता रहा है ना, आपको बातें कर रहा होगा, मैं आपको 15 मिनट में दिखा दूंगा कि फॉर्मेशन क्या चीज। ठीक है। ऑप्स का मैंने आपको बताया कि वो 15-15 मिनट की छोटी छोटी लैब्स हैं डेवऑप्स के अंदर ना, जो आपको करनी है। सही है। ठीक है। ये जो डेवऑप्स की जो लैब्स है ना, ये वाली लैब्स, ये आपको करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की, और ये वाली लैब्स, ये कोड डिप्लॉय, ये सब। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि ये तो एग्जाम मैंने आपको बता दिया कैसे पास करना। फिर कह रहा है ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, ऑटोमेशन प्लेबुक विद एंसिबल, इंफ्रास्ट्रक्चर विद टेराफॉर्म। अब ये सारी चीजें एंसिबल जो है वो इसने यहाँ कवर की है। ठीक है, 20 घंटे में यहाँ पर ये लोग कवर कर रहे हैं। आप इसकी एंसिबल भी पढ़ेंगे, आपको ये आपको यूडीमी के उन्होंने पकड़ा दिया ना चीजें कि जी, यूडेमी में आई है जी। और आपको कैसा लगा आप? जी, यूडेमी एंसिबल का कोर्स अभी मैंने शुरू किया है, तो आप ज्यादातर जब देखेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसने, क्योंकि ये IBM में काम कर रहा है। ठीक है अच्छा। ना, IBM ये जो पूरा कोर्स जिसने पढ़ा है ना, वो IBM का ऑटोमेशन का डेवऑप्स का लीड है वहां पर। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब ये सब कर लेते हैं ना, तो ये टूल्स हैं जो आप ऐसे ही घर जाके बैठ के देख लें। अगर आपको ये ना, ये सारे टूल्स हैं जो, यानी कि गिटहब है, मेवन है, जेंकिंस है, ये तकरीबन 27 टूल्स हैं। ठीक है ना, स्प्लंक है, प्रोमीथियस है, सब कुछ है। ठीक है ना, टेराफॉर्म भी है, न्यू रेलिक भी है, नागिस भी है, सब है। तो ये सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। AWS की जो नेटवर्किंग है, ये पूरी की पूरी नेटवर्किंग यहाँ पर कवर हो जाती है। देखें, ये नेटवर्किंग जो है ना, ये रही ऊपर इसने कवर की है, ये पूरी आपका नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना, राउंड रॉबिन करना, रैबिट होल सिक्योरिटी ग्रुप करना, सब कुछ करना। इसके नेट के गेटवेज हो गए, पेयरिंग हो गई, इलास्टिक IP हो गई, ये सारी की सारी नेटवर्किंग। ठीक है, उसने आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाया है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देके। फिर सिक्योरिटी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, डेटा, पिड, सिक्योरिटी जोनिंग उसने यहाँ पढ़ा लिया आपको ग्रुप में, और जोनिंग उसने यहाँ पर सारी पढ़ाई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि भाई AWS फाउंडेशन सिक्योरिंग योर क्लाउड, ये पूरी की पूरी जो चीज है ना, उसने आपको सब पढ़ा दी है। यानी कि आप चला लें ऐसी, देखें इसको, ठीक है, इस पे काम कर लें। ठीक है ना, ये आपका ऐसे ही निकल जाएगा। और गेटिंग स्टार्टेड विद AWS आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, सबसे पहले उसने ऊपर IAM पढ़ाया है आपको, ये आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट AWS का। क्लाउड परमिशंस कैसे करते हैं, कैसे सेट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें सब। फिर डेटाबेस वेयरहाउस, यहाँ उसने डेटाबेस के अंदर सारी चीजें जो है ना आपकी, डेटाबेस को स्वैप कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ऑटोमेशन क्या है, हर चीज उसने यहाँ पर S3 बकेट्स की सारी चीजें उसने यहाँ पर कवर कर ली। बिग डेटा ऑन AWS, बिग पिक्चर, ये ऐसी बातों वाला कोर्स, ये थ्योरी है। एनालिटिक्स, इसने सर्वर एनालिटिक्स सारी की सारी यहाँ पर इसने नीचे क्या नाम है इसमें
रेडशिफ्ट और किनेसिस में और डायनामोडीबी में कराई। ठीक है। तो इसके बाद AWS डायनामोडीबी डीप डाइव, ये इतना लंबा डाइव लेके जा रहा है, वो आपको सिर्फ काम करवा रहा है, आपको डायनामोडीबी पे काम आ जाएगा। आप जाके बोलोगे मैं अभी आपको कॉन्फ़िगर करके देता हूं, ठीक है ना। ये रेडशिफ्ट की डेटा वेयरहाउस की बात कर रहा है, ये पूरा उसने कवर किया हुआ है यहाँ पर। रेडशिफ्ट का मैंने पता है ना आपको। हाँ हाँ। 19 जो है ना उसका, सेक्शन 19, अगर मैं देखूं कि ये कितने घंटे का है, क्या है, मैं आपको वो भी देख के बता देता हूं। सबर करें आप। यूडेमी पे ज्यादातर वो थ्योरी है बहुत ज्यादा, उसमें मतलब बातें ही की गई हैं। और उसने क्या किया है, उसने अब्दे अली ने आपको, अब्दे अली बोल रहा हूँ, काजिम ने क्या किया है, उसने डायरेक्ट चीज खोली, हम्म कॉन्फ़िगर किया आपके सामने और बताया यार देखो ऐसे होता है। देखिए ये उसके कोर्सेज हैं, उसकी वीडियोस हैं जो आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। हम्म अगर आप मंथली लेते हैं तो आपको ये कोर्स इस तरह से खुलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको मिलेगा कोर्स, क्योंकि कोर्स बड़ा जबरदस्त है। अगर आप जो कह रहे थे ना रेड शिफ्ट की, और देखें हाँ 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 2 घंटे के अंदर, 120 घंटे के अंदर, 120 मिनट के अंदर इसने पूरा का पूरा आपको कवर करा दिया कि कैसे है। यानी कि आप सबसे जो उसका डीप डाइव इनटू EBS इंक्रिप्शन है, ठीक है, ये एक अलग है, ये सबसे बड़ा लेक्चर है। बाकी सारे लेक्चर ना मतलब जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें करवा रहे हैं। रिवर्सल, बिल रिवर्सल कैसे करते हैं, ठीक है ना। AWS की डॉक्यूमेंटेशन में नेट गेट पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और फिर इसकी लाइव क्लासेस अलग है जिसमें बैठा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। आपको ये जो पूरी चीजें करवा रहे हैं ना, हम्म तो ये सब चीजें जो आपने की हुई है, ये सारी की सारी चीजें इसने वहां पर कवर कर दी है। तो मैंने आपसे कहा ना डेवऑप्स और वो आपको कवर करता है। अब आपको उसमें अगर आप बोलते हैं कि यार मैं डेवऑप्स से वहां पर करवा देता हूँ, ठीक है, हाँ। फिर आप बाकी चीजें कैसे कवर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, वो फिर हाँ कुछ चीजें रह जाएंगी उसमें फिर। आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक फिर मुझे मतलब लेना ही पड़ेगा, वही उसका एड ऑन जो आप कह रहे थे वो करना पड़ेगा। फिर आपको फॉरन से कंज्यूम करना पड़ेगा 75 आवर्स और 159 आवर्स, ठीक है। तो आप ठीक रफली है। ये 160 कर दें उसको, ठीक है, और आप उसमें ये आवर्स डाल दें, 70 आवर्स डाल दें आप उसमें, ठीक है। हम्म आवर्स कितने बनते हैं, एक मिनट सबर कर, ठीक है, ये बनते हैं 45, ठीक है ना। 45 आवर्स, इसका अगर मैं मिनट्स का करूं तो 2707। तो लेट मी सी, एक चीज देखता हूँ, 7 divided by 60, 45 आवर्स में आपको 45 और प्लस 150, 195 आवर्स में आपका सारा काम हो जाएगा। अब 195 आवर्स अगर आप हैं, 195 को आप जो है ना रोजाना अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 40 डेज में खत्म हो जाएगा काम। अगर आप वीकेंड पे रोजाना 5 घंटे पढ़ें, अगर आप ज्यादा पढ़ लेते हैं, वीकेंड्स पे ज्यादा कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। एग्जाम पास करके आ जाओगे। एग्जाम पास करने से पहले आप काजिम से बोलो यार कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, काजिम भाई कोई टिप्स हैं, कुछ है मुझे बता दें। हम्म आपका ये है, ये आपका, आपकी रोज की 5 आवर्स की जर्नी है। वीकेंड्स पे अगर आप ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, आप ज्यादा कर लेंगे। तो ये आपके लिए था। अच्छा, वो रिकॉर्डेड भी हो गया, आपको मिल भी गया। अब आप देख लें इसको, ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, बल्कि इससे ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है। आप उसको देख लें कि आपको कैसे करना है। तो एड ऑन में मंथली की भी ऑप्शन है, एड ऑन अगर मैं लेता हूँ तो उसमें। मंथली के ऑप्शन है। द ओनली कैवियट इज कि आप अगर मंथली लेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ पहले मंथ में ये लेक्चर्स मिलेंगे खाली इसके 6 घंटे के। दूसरे मंथ अच्छा में आपको अच्छा, फिर मुझे मतलब महीने के हर महीने वेट करना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है, वो ड्रिप स्केड्यूल जो है वो स्केड्यूल, जी। तो मंथली के बाद फिर क्या है, हाफ ईयरली की ऑप्शन है या क्वार्टरली की ऑप्शन है कि क्या? आप जाके उससे बात करें, ठीक है ना। आप जाके उससे, क्योंकि हमने पूरे 10 महीने पे इस पूरे कोर्स को फैलाया है, ठीक है ना। अच्छा, और मैं क्योंकि किससे, काजिम से, काजिम सर, काजिम से बात करूँ? अजीम के पास ये नहीं, आपको रजा हमजा से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, हमजा साहब से बात करनी पड़ेगी। हमसे बात अच्छा। करनी पड़ेगी, ये मेरी लाइव क्लासेस हैं। जब आप पास कर लेंगे, ये लाइव क्लासेस जो है ना मेरी, वो क्या नाम है, मई से मई बोल रहा हूँ, मार्च से शुरू हो रही है इसकी लाइव क्लासेस, CCS के और CCSP। अगर आप CCSK को देखते हैं, CCSK क्या चीज़ है, तो इसका सिर्फ बूट कैंप ही आपको जो है ना, अगर आप इसकी ट्रेनिंग देखते हैं क्लाउड सिक्योरिटी की, तो आप जाके देख लें। सिर्फ इसकी ट्रेनिंग जो है ना आपको यहाँ पर जो मिलेगी। अगर आप इसका एग्जाम आपने देना है, एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप जो पढ़ लिया, आपको नॉलेज आ गई, खत्म, आपको एग्जाम। हम्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs है, सब कुछ है। अगर आप इसकी क्लास देखते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे ट्रेनिंग करनी है इसकी, तो व्यू क्लासेस में आप जाइए और आप देख लें
अगर आपने ऑन डिमांड लेना है, ऑन डिमांड भी अगर आप लेते हैं तो देखें $795 का एक कोर्स है ये, ठीक है। इसमें ठीक सिर्फ है। आपके एसेंशियल्स हैं सारे, फिर इसमें कुछ आगे आगे डिफरेंट चीजें आती हैं, सब कुछ आता है, मगर ये सारी की सारी जो चीजें ना ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, हैंड्स ऑन सारी जो चीजें हैं वो करवा रहा है, ठीक ठीक है। है। ठीक ये है। है, और क्योंकि ये मेरा कोर्स वो खुद बैठ के भी कर रहा होगा, ठीक है, उसने कहा ठीक है। फिर CCSP जो है, ये क्लाउड सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल है, आप इसका भी बूट कैंप देख लें, IC स्क्वायर का जो है, ठीक है ना, तो आप उसकी भी फीस देख लें। अच्छा, बहुत डिफरेंट है, मतलब कि जो है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपने ट्रेनिंग इसकी लेनी है क्लाउड, उसके पैसे वैसे क्या ले रहे हैं, गेट न्यू प्राइसिंग, आप ऑनलाइन पे जाएं और आप देख लें, इंस्ट्रक्टर लेड करना है, क्लासरूम बेस्ड क्या करना है, बाकी देख सर सकते अभी ये चीजें ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो अभी तो मैं वही जो फोकस करना चाह रहा हूँ जो उन्होंने हैं। आपका बोला जो है कि फोकस है उसी पे होना चाहिए, अगर आप वो जी करते हैं आप, या आप इसको लगा के सिर्फ साइड पे रखें, आप वो देखें, आप वो देखने से ही आपके एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर हमजा साहब से कांटेक्ट फिर करता हूँ इसमें तो। आपको इसके पूरे इसमें एक एग्जाम पास करना, दिस एग्जाम इज मैंडेटरी, राइट, एक ही जी है, जी जी। वो ऐसे ही नहीं करना। जो AWS का CSA जो है ना, सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, वो चीज जो है ना पूरी उसने कवर करवाई हुई है अपनी, ठीक है ना, वो आपकी पूरी कवर्ड है। पूरी कवर्ड है, अच्छा ठीक है। जो है ना, ये AWS का सर्टिफाइड जो है ना सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है ना, ये वाला, जी जी ये जो आपसे मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं, जी जी यही बिल्कुल एग्जैक्टली। ये चीज आपकी जो है ना पूरी कवर्ड है। 22 आवर्स और 42 मिनट्स की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग 45 आवर्स की है। अच्छा 45 आवर्स, वाह, बहुत ये डिफरेंस है ना, मतलब कि डबल, हाँ। ठीक है। उसमें सारा, उसमें वो कोई आपको कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, स्लाइडे वाइडे नहीं दिखा रहा, सिर्फ काम करवा रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। मुझे जरा नमाज पढ़नी है, जाना है इंशाल्लाह, फिर मैं कल दोबारा लाइव होऊंगा, कल बात करूंगा, कल अलग टॉपिक होगा, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जिनके जो सवालात हैं कल आ जाएं और मैं देख भी लूंगा बाकी, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।